The second question of exercise 11.2 is construct a triangle ABC in which BC equals to 8 centimeter, angle B is 45 degree and AB minus AC, that is the difference of rest two sides is given, which is 3.5 centimeter. So at first we draw BC equals to 8 centimeter. So it is our side BC, which is equals to 8 centimeter. Now we draw 45 degree angle at B, because angle B is 45 degree. So here we draw 45 degree angle. So at first we draw an arc of some radius. From this point again we draw an arc of same radius. Now by taking this as center, we draw an arc. Now by taking this point as center, we draw an arc of same radius. Now you can see that these two arc cut intersect at some point. So this is our 90 degree angle. But angle B is 45 degree angle. So we bisect this angle. So now for bisect, we draw an arc from this point. Now take this point as center, because this one is 90 degree. So at first we take this point as center. Now I am taking this point as center. Again we draw an arc of same radius. Now we join this intersecting points of two arc with B point. So suppose this line is BY and it is 45 degree angle. Now the difference of two sides is given, which is 3.5 centimeter. So with the help of scale, at first we measure 3.5. So here I measure 3.5 and we cut a line segment of 3.5 centimeter from B. Now we suppose this point is D. Now we join DC. यहाँ तक की प्रोसेस सेम है. जब आपको टू साइड्स का सम दिया हो तो हम उसमें भी यही करते थे. सबसे पहले बेस हम ड्रॉ करते हैं एंड एंगल, जो हमें एंगल दिया हुआ है किसी एक वर्टेक्स पे, उसे फॉर्म करते हैं. देन हम जो एडिशन या सम दिया हुआ है टू साइड्स का, वो कट करते हैं उस लाइन पे. यहाँ तक की प्रोसेस दोनों में सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है अब. लेकिन जब हमें सम दिया रहता है तो हम एंगल ही बनाते हैं. जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है उतना ही एंगल इस सी पॉइंट पे, दूसरा वर्टेक्स है, वहाँ पे फॉर्म करते हैं. बट डिफरेंस में हम ऐसा नहीं करेंगे. ओके, जो ये डीसी साइड हमें मिली हुई है, जो लाइन सेगमेंट मिला हुआ है, हम इसको का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. सो वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीसी. सो फॉर इट वी टेक हाफ ऑफ मोर देन हाफ ऑफ डीसी. हम डीसी की जो हाफ लेंथ है उससे ज़्यादा की डिस्टेंस लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे. सो वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस which is more than half of DC. So here I draw an arc and here I draw an arc. Both sides we draw an arc. Now again I am taking D as center. I draw an arc of same radius. Now you can see that we get two intersecting points. So we join
these 2 points. Now this perpendicular bisector cut the line BY at some point. Suppose this point is A point. This is our required vertex A. Now we join A and C. So now BAC, that is triangle ABC, is our required triangle. Triangle ABC is our required triangle. When you measure the length of AB and AC with the help of scale and find the difference is same, that is 3.5 centimeter.